Hello everyone, welcome back to yet another episode of Health Bar. Today, this is the last topic that we will be discussing in this series of vitamins and minerals, and today we will be discussing about calcium. Calcium के बारे में कुछ एक brief overview आज हम करेंगे, and tomorrow we will be doing the question and answer session. So if you do have any questions regarding your calcium supplements or your calcium sourcing, do drop in a message on the chat box, or you can even put it down on the group whenever you find it convenient. So before we start the day today, I would request Joshiji to come forward and conduct the morning prayer and kick off our day. Over to you, Joshiji. सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार। आज पूर्णिमा है चैत्र मास की। हनुमान जयंती भी आज हम लोग मनाते हैं, हनुमान जी का जन्मोत्सव। तदनुसार शनिवार 16 अप्रैल 2022। आइए आज हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि के रूप समान, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। सबको नमस्कार। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओवर टू मीनाक्षी। Dhanyavad Joshi ji for starting off our day and giving us this beautiful prayer. So we'll start off with our topic. So आज कैल्शियम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. We've already talked about vitamin D, which goes in hand. मैंने बताया कि they are best friends and vitamin D जाके सिफारिश करता है बहुत जगह for calcium release and absorption. So let's talk about calcium today. So calcium आप सब जानते हैं. I think this is one of the most ये एक ऐसा मिनरल है जिसके बारे में ऑलमोस्ट आप सब इसके जानते हैं इसके बारे में. So what we are going to talk, you might already know, it is one of the most important components in bones and teeth. ये आप सब जानते हैं that बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड जो हमारी जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज में रिजिडिटी जो है, टिश्यूज की स्ट्रेंथ, उसके लिए भी calcium बहुत important है. So this is what you must know. The small ionized pool of calcium in the circulatory system so this complete नहीं है sentence, but anyway, so इसमें जो जो रोल्स हैं, फंक्शंस जो हैं कैल्शियम के, आप देखिए ब्लड वेसल की हमारी जो नसें होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट होना एंड उनका डायलेट होना. सो दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जब भी हम एक मसल ग्रुप को यूज करते हैं वहां पे ब्लड सर्कुलेशन हमें बढ़ाना होता है. एंड जब हम सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर एंड उसके लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है. सो एनी मसल मूवमेंट यू विल नीड कैल्शियम. So whether it is a blood vessel, like those the smooth muscles, or it is the muscles that we use when the bigger muscle groups. तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन में और हमें कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन में वी विल नीड कैल्शियम. उसके अलावा नर्व ट्रांसमिशन में एंड हार्मोनल सेक्रेशन में भी कैल्शियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. तो दिस इज व्हाट यू शुड नो. So again, this is not important. Let's move on. So this is the calcium metabolism that we need to know. Just one second. So जब कैल्शियम हमारे बॉडी में ज्यादा होता है, then there is something called calcitonin. ये जो है, ये इसमें बोन में से
So you all know that bone is a powerhouse of calcium, and bone में so our teeth are different. हमारे जो दांत हैं, दांत में से resorption and absorption ये सब नहीं होता for calcium, but जो bones हैं, the longer bones, especially the bigger bones, इसमें से absorption of calcium and deposition of calcium, ये एक store house है जिससे हम calcium लेते रहते हैं और उनको calcium देते रहते हैं depending on how much calcium is there in the body. So ये calcium का supplier है of the calcium homeostasis, मतलब calcium का एक normal level हमारे शरीर में maintain करने के लिए this is an important storehouse, bones. सो लेट्स सी कि जब कैल्शियम हमारे शरीर में कम होता है तो क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन जो है ये बढ़ता है एंड दिस प्रमोट्स द रिजॉर्प्शन, मतलब ये किडनी से हम जब कैल्शियम जो हमारे एक्सेस होता है बॉडी में, यूजुअली हम उसको किडनी से उसको हम अपने यूरिन के द्वारा उसको निकालते हैं, लेकिन जब कैल्शियम कम होता है तो ऑटोमेटिकली पैराथायराइड हार्मोन जो है ये किडनी को एंड इंटेस्टाइन्स को ये एक मैसेज भेजता है कि वी नीड कैल्शियम इन द बॉडी, तो हमें आप वापस इसको जो आप बाहर भेजने वाले थे इसको वापस भेज दीजिए. So that is the work of the parathyroid hormone, kidney, intestines and to the bone. It will ask them to send it back to the body. So plasma calcium then will increase. And similarly there is another mechanism कि अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो calcitonin है and it will cause the release into the feces and urine. So this is how the calcium homeostasis, मतलब एक नॉर्मल रेंज में कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए ये वाले हार्मोन्स जो हैं ये प्रतिबंध हैं. सो अगेन लिटिल बिट ऑफ मोर डायग्राम्स इन दिस पिक्चर. सो पैराथायराइड हार्मोन है ये इससे बोन से कैल्शियम ले लेता है एंड इट कॉजेज इंक्रीज्ड कैल्शियम and phosphorus. So again, even in the small intestine, the parathyroid hormone and the kidney, ये इनको बोलते हैं कि कैल्शियम को हमें वापस दे दो. Another diagram showing just the same. So let's move on. So calcium, now we are coming to an important topic about calcium, and that is about calcium bioavailability. मतलब हमें calcium हम अपने कोई भी खाने से हम कितना calcium हम निकाल पाते हैं. So calcium आपको जानना है कि calcium एक बड़ा mineral है. It is a large mineral and it is not easy to break it down in the gut. The amount of calcium listed on the nutrition facts label of a food product is the measure of calcium in the food. So let me give you an example. So आप कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के आप एक उसकी न्यूट्रिशन आप इंटरनेट पे देखेंगे उसमें कितना कैल्शियम है, जितना कैल्शियम उसमें लिखा हुआ है जरूरी नहीं है आपका शरीर उतना अब्सॉर्ब कर पाएगा. So their body will not be able to absorb that. So different food products have different bioavailabilities. मतलब अलग अलग खाने से, I will just explain it with examples at the moment, in a moment. So जो different food products है, they have उससे हम हमारी extract करने की क्षमता अलग अलग होती है depending on the food product. So So yes, if we want to know that the amount that is actually absorbed and used by the body, this is called calcium bioavailability of that product. So ये information important है for people who follow a vegan diet and जो dairy या दूध and paneer and cheese नहीं खा पाते, उनके लिए है for those also who are lactose intolerant. So just give me 1 minute. My one entire slide is missing. Just give me 1 minute, please. Just 1 second. There was a good example and that's why I wanted to share that, but I think I've lost that slide. So I'm just going to put the data here.
hope the remaining slides are there. Okay, I just have it. I don't have pictures now, but let's just go back and read this, है ना? So this is calcium bioavailability. हम calcium bioavailability के बारे में बात कर रहे थे. So some foods have higher bioavailability than others. तो अगर हम डेयरी फूड्स की बात करें, दे हैव अ बायोअवेलेबिलिटी ऑफ 30%, विच मीन्स दैट अगर कोई भी हम प्रोडक्ट खा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 300 मिलीग्राम कैल्शियम उसमें है पर कप में, तो हमारा शरीर जो है वो उसमें से 100 मिलीग्राम ही अब्सॉर्ब कर पाएगा. सो दिस इज सो डेयरी फूड्स जो हैं इनकी बायोअवेलेबिलिटी 30% है. लेकिन प्लांट फूड्स जो हैं, प्लांट फूड्स में इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है. तो आपने देखा यहाँ पे 300 मिलीग्राम कैल्शियम जिसमें था डेयरी प्रोडक्ट्स में से, सो उसमें से हम 100 मिलीग्राम ही उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर वेजिटेबल कॉल्ड बॉक चॉय. ये एक चाइनीज वेजिटेबल होता है. सो आई अनफॉर्चुनेटली डोंट हैव एन इंडियन, I'll try to look this up for tomorrow session, but अभी मेरे पास सिर्फ bok choy का example है अभी सामने, because the numbers I don't have the numbers for any other product at the moment. So this is a Chinese vegetable जो Chinese cooking में frequently use होता है. It is a green leafy vegetable. सो प्लांट फूड्स जिसमें लीफी ग्रीन्स होते हैं इनमें कैल्शियम अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम कम होता है, लेकिन इनकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है. तो हमने देखा डेयरी फूड में जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 30% होती है, लेकिन अगर ग्रीन वेजिटेबल्स देखें उसमें इनकी बायोअवेलेबिलिटी 50% तक होती है. सो अगर आप एक कप में 160 मिलीग्राम इनका 160 मिलीग्राम कैल्शियम है, तो वी विल बी कंज्यूमिंग 80 milligram, if you are consuming that 1 cup. तो क्योंकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी हम 50% इसमें से कैल्शियम हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे बॉडी अब्सॉर्ब कर सकता है. सो ऑलमोस्ट सिमिलर, बिकॉज अगर हम 300 मिलीग्राम कैल्शियम वाला एक कप दूध पी रहे हैं, देन वी आर अब्सॉर्बिंग ओनली 100 मिलीग्राम, लेकिन यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 80 मिलीग्राम हम कंज्यूम कर रहे हैं इन जस्ट 1 cup of bok choy. So I will try to look this up and see what are the other very high sources of calcium and जिनकी बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है. इसी के बारे में मैं पालक का उदाहरण देना चाहती थी, बट पालक के साथ में एक प्रॉब्लम है, एंड आई विल डिस्कस दैट विद यू राइट नाउ. सो again, almonds also have a slightly lower calcium bioavailability, but of course they're very good for health, and a lot of other benefits are there with calcium, but इसकी bioavailability जो है वो 20% है. Still it is still rich in calcium. इस चीज का आप ध्यान रखें. So the reason that I discussed this is there are a lot of people who are lactose intolerant and उनको लगता है वो calcium नहीं consume कर पाएंगे. But remember that even plant foods have calcium in them, and they might be a comparable source, if not better, for calcium. So let's move on. लेकिन प्लांट्स के साथ में देयर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम दैट वी हैव, एंड वो है एंटी न्यूट्रिएंट्स. क्या है ये एंटी न्यूट्रिएंट्स? दैट मीन्स दैट देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स, certain chemicals in these plant substances, not chemicals, not synthetic chemicals, but some let's say some enzymes that वो लड़ाई करते हैं कैल्शियम के साथ में, एंड वो कैल्शियम को अब्सॉर्ब नहीं होने देते. सो बाइंडिंग टू कैल्शियम, कौन से ये केमिकल्स हैं? दैट इज ऑक्सलेट्स एंड फाइटेट्स. सो ये दे बाइंड टू कैल्शियम, ये कैल्शियम के साथ में जुड़ जाते हैं और फिर ये कैल्शियम को यूज नहीं होने देते. सो दीज आर द सर्टन. सो लेट्स जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ स्पिनच. तो स्पिनच में जो ये एंटी न्यूट्रिएंट्स है लाइक ऑक्सलेट्स एंड फाइटेट्स, ये कैल्शियम को अब्सॉर्ब होने में इसको रोकते हैं. सो स्पिनच इट कंटेन जस्ट वन सेकंड.
So spinach contains most calcium. अगर हम इसके कंटेंट देखें तो it contains almost 260 milligrams, 100 milligrams more than bok choy. बट इसमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%. एंड दैट मीन्स ओनली 13 milligram of calcium can be used by the body when you are consuming even 1 cup of spinach. So ये चीज, this is the issue. So please don't stop eating spinach, because that is, calcium is not the only nutrient that spinach has. Spinach is very very healthy for you. So spinach को जब भी सीजन में हो तब जरूर खाएं. And I think that's about it about this bioavailability that I have. So one more thing that this is, I will discuss this tomorrow again in the question and answer round. But ये जो calcium binding food है like spinach, इसको हमें calcium rich food के साथ में खाना avoid करना चाहिए. So if we are consuming anything with the intention of absorbing calcium from it, तो उसमें अगर हम साथ में spinach खाएंगे, because it has oxalates and phytates, वो absorb नहीं हो पाएगा. So we can have it at a time that is not with the calcium rich food. So I think we've already talked about the bone remodeling. This bone remodeling is something that happens continuously. हर एक शरीर में bone remodeling होते रहती है. It is constantly calcium हम उससे निकालते रहते हैं, calcium deposit करते रहते हैं. So this is one thing that you need to remember. एक चीज कैल्शियम के बारे में और इम्पोर्टेंट है आपको ध्यान रखना, और वो ये है कि हमारे शरीर में इन विमेन स्पेशली, जैसे ही इनकी उम्र बढ़ती है और जब इनके मेनोपॉज के पास में ये पहुंचते हैं, तो इनके एस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है. एंड दिस कॉजेज अ डिक्लाइन इन देयर कैल्शियम लेवल्स एज वेल. सो ऑलवेज पोस्ट मेनोपॉजल विमेन की एक कैल्शियम की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी. सो ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है. So that these are 2 or 3 groups that I would just like to talk about that are at risk of calcium deficiency. The number 1 is postmenopausal women. So इनमें एस्ट्रोजन कम होता है and जो calcium absorption जो है ये इनका कम हो जाता है, because estrogen is responsible also for absorbing calcium, and इसके वजह से इनको osteoporosis होने की संभावना रहती है. So there are a lot of therapies for this, and we can talk about it at another point maybe. But yes, इनकी calcium की extra requirement होती है. Now people who have amenorrhea, which means that कोई भी कारण से उनकी periods जो हैं बंद हो गए हैं at a young age. It can be temporary or it can be permanent, but at this time they will be having a calcium deficiency, and this needs to be taken care of. So calcium deficiency की क्या क्या symptoms हैं, आइए देखते हैं. So tingling and sensation around the mouth, you can have these kind of symptoms. आपको tingling and sensation हो सकता है. You can have cataract, stomach pain or diarrhea. You can have some diarrhea here. Dry skin. आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो सकती है. मसल के आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी में, एंड ये बहुत फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड सिम्टम है, मसल क्रैम्प्स. आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो आपको लगेगा कि थोड़े से बढ़ गए हैं जो मसल रिफ्लेक्सेस है, बट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट इज ओनली सीन ऑन एग्जामिनेशन, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. हेयर लॉस आपको हो सकता है. आपके नाखून जो हैं ये बहुत ब्रिटल हो सकते हैं. आपकी जो हार्ट बीट है ये थोड़ी सी स्लो हो सकती है. ब्रैडीकार्डिया आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है. ब्रैडीकार्डिया मतलब स्लोड हार्ट बीट. यूरिन की, सो देखिए यूरिन और इंटेस्टाइन दोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, मतलब कि यूरिनेशन भी बढ़ सकता है और डायरिया भी हो सकता है. एंड अगेन टिंगलिंग एंड क्रैम्पिंग इन हैंड्स एंड फीट. सो क्रैम्पिंग इज वन वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी. सो अगेन अनदर पिक्टोरियल टू शो यू. So muscle weakness आपको हो सकते हैं, muscle cramps very very commonly reported. Osteoporosis के कुछ symptoms आ सकते हैं. Fatigue आपको हो सकता है. Cataract is one calcium deficiency can precipitate cataract in a lot of people. So this is one thing that you need to remember. Difficulty swallowing, voice changes आपको हो सकते हैं.
Tooth decay, this is also very important. So when you go with a lot of tooth decay to your dentist, they might ask you to get your calcium levels checked, and calcium आपका कम हो सकता है. Brittle nails, coarse hair, dry hair, so these are the things that might happen if you have calcium deficiency. So again, brittle nails are very common. So अगर hypercalcemia के बारे में 2 मिनट के लिए बात करें, so this can happen in people who are taking more than 2500 milligram daily, if you from foods as well as supplements, दोनों मिला के अगर 25 मिलीग्राम से ज्यादा ले रहे हैं तो ये हो सकता है. तो यूजुअली जो 50 के ऊपर हैं उनको 2000 से ऊपर लेने के लिए हम मना करते हैं. एंड इनको क्या क्या हो सकता है, they can develop kidney stones, they can develop prostate cancer, and it can develop constipation. So another thing that we all know and we have heard about, कि calcium जब ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो blood vessels में जमा होने लग जाता है, किडनी में जमा होने लग जाता है, स्टोन बढ़ने की आशंका रहती है. एंड अगर हमारे कैल्शियम हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है तो वहां पे वो जो है वो स्टिफनेस आ जाती है उसमें, एंड वी माइट डेवलप जो एक प्लाक होता है, प्लाक को स्टिफ बनाने में और ब्लड वेसल्स को स्टिफ बनाने में कैल्शियम का हाथ रहता है. तो जब कैल्शियम बहुत ज्यादा होती है तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. So let's move on from here. And so what are the causes of hypercalcemia? Dehydration can cause hypercalcemia. A lot of vitamin D if you're taking, then ये आपको पता है कि ये best friends हैं, तो ये आपका calcium भी बढ़ जाएगा. Medications कुछ हैं जो I will discuss them tomorrow. Breast cancer can be a cause of hypercalcemia. आपको breast cancer है तो आपको हो सकता है कि शरीर में calcium की मात्रा बढ़ जाए, या फिर आपका parathyroid hormone overtime काम कर रहा है and calcium को extract करे जा रहा है from the bones. So what are the symptoms? Bones and groans, bone stones and groans is what we say that can happen. So you can have abnormal bone remodeling and fracture risk. आपको ये बहुत ज्यादा आपके शरीर बोन डिपॉजिट हो रहा है, आपके बहुत ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है आपके बोन्स में. दिस कैन कॉज अबनॉर्मल, आपका बोन जो है वो अजीब तरीके से हो सकता है बढ़ रहा हो, एंड दिस कैन कॉज फ्रैक्चर. स्टोन्स, आपकी किडनी में स्टोन्स बढ़ सकते हैं. ग्रोन्स मीनिंग आपके पेट में दर्द, पेट में क्रैम्प्स आना, नॉजिया होना, and constipation होना. Excessive calcium will cause constipation, and even your calcium supplements, they can cause what do you call it? They can cause constipation. So usually we avoid giving it at night. So physical overtones, lethargy, depressed mood, psychosis, cognitive dysfunction, ये भी आपको हो सकता है. So if you have hypercalcemia, then you have to speak to the doctor and get it fixed. So calcium के कुछ sources quickly we will see. So we have broccoli as a good source. Chia seeds, so these are not the same as sabja seeds. Chia seeds अलग होते हैं, and इनको भी आप consume आप कर सकते हैं. They are very healthy for you. So in the morning you can have a bit, you can put it in your coconut water, you can put it in your milk and you can consume it. You can just soak it in water and you can consume it. It is really healthy for you. So spinach again, but spinach की bioavailability के बारे में याद रखें. Almonds also are very very rich. So almond butter is one form in which you can consume it. तिल है, जो तिल भी एक अच्छा source of calcium है. Usually we consume it in winters. So गर्मियों में इसको लेने से पहले थोड़ा सोचें. Orange juice is also it also has some amount of calcium. So usually orange juice जो fortified होता है वो उसमें calcium ज्यादा होता है, normal orange juice में इतना ज्यादा नहीं होता. Rice milk, yes, this is also rich in calcium. So soya milk भी है एक option. So these are all the vegan options I believe. And इसमें these are the vegan options for calcium, and for vegans and vegetarians these are the ones that you can consume if you have lactose intolerance. So ये हम ले सकते हैं. अगर इंडिया में हम देखें तो again you can have so भिंडी, खजूर, chia seeds. I think that chia and sabja would be similar, would have a similar profile on calcium. I'll look this up and I'll confirm tomorrow.
इसके अलावा रागी is one of the grains that is found in South India, and it is very very rich in calcium. So calcium बहुत अच्छी मात्रा में इसमें मिलता है. So if you can consume it, that would be really good for you. Even bananas are rich in calcium, so this is one more thing that you can consume. So that's all that I have today. So योगेश जी कह रहे हैं कि अगर किसी को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, they can consume spinach as its calcium bioavailability is only 5%. So what you have to know is that you cannot consume that for its calcium content. So that's what I'm saying. So yes, spinach वो खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें. There is no problem. So yes, the basic information has been given. Can we have spinach with protein? Spinach with paneer. So you can have it, but जो पनीर में जो कैल्शियम आपको जितना निकालना है, ये उसमें because it has oxalates and phytates, वो उसको bind करेगा. तो it would be better if you sort of do separate the two. स्पिनच के साथ में आप पालक पनीर की अगर बात कर रहे हैं तो पनीर अलग से खाएं, मे बी इन अनदर मील, एंड यू कैन हैव पालक कॉर्न और पालक मटर और समथिंग लाइक दैट. Calcium deficiency in body leads to which diseases? At the same time, what happens if it is excess in the body? I think बात करा हमने इसके बारे में. When should we start taking calcium supplements, and which is the best supplement to be taken, its dose and frequency? So Divya ji, कौन सा supplement हमें लेना चाहिए? There are a couple of forms. Let's discuss that tomorrow. आज थोड़ा सा समय कम है, but कब लेना शुरू करना चाहिए? When you are in the premenopausal period, that would be a good time to start your calcium supplements. So because the forms of supplements इसकी थोड़ा लंबा है, please do join in tomorrow, Divya, and we'll discuss this in detail. Patient who had previously latent tuberculosis now feeling calcium deficiency can take supplements. You can, but it is better to always discuss with your doctor and then consume it. So is there a particular form? अगर आपको calcium की supplements लेने से अगर आपको constipation हो रहा है, so usually people who people might get constipation, तो हम रात में लेने से मना करते हैं क्योंकि वो उनको सुबह फ्रेश होने में they have a little bit of problem, and वो constipation से बहुत परेशान हो जाते हैं. तो we usually say to have it in the afternoon. So iron in the morning and calcium in the afternoon. ये दोनों साथ में नहीं लेना है. Patient, yeah, so I think that's what we have for you today. Thank you everyone for joining in. We'll be back tomorrow with another show. We will be discussing more questions and answers on calcium tomorrow. So and this would be the end of our vitamins and mineral topic. अगर आपको कोई भी topic discuss करना है, please put it down here in the chat box, and we will be happy to take that up from